Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we'll discuss about the computer English. The questions are on your screen. The first question for you. Question number 51. Soft copy is the intangible output. So then, what is hard copy? The question for you. The soft copy is the intangible output. So then, what is hard copy? सॉफ्ट कॉपी जदि गोटे इंटांजिबल आमे कहूचे जोटा को आमे देखि पारुने छुई पारुने और निर्दिष्ट किछि गोटे आकार न थाए बोली आमे कहूचे कंप्यूटर रे ताले हार्ड कॉपी कहिले कंप्यूटर रे कोन बुझा जाय द ऑप्शंस आर द प्रिंटेड पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर द ऑप्शन बी द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ऑप्शन सी द प्रिंटेड आउटपुट ऑप्शन डी द फिजिकल आउटपुट डिवाइस एंड last option is none of these. Which option is the right answer? Anyone can give the response. If anyone can give the response, then simply chat the message. Give your response by chat. The right answer is option C, the printed output. आमे जदि हार्ड कॉपी कहूचे सॉफ्ट कॉपी कहूचे सेटो को आमे देखि पारुने छुई पारुने ताले हार्ड कॉपी माने जोटा प्रिंटेड आउटपुट जहा को आमे देखि परिबा छुई परिबा तार केते बड़ साइज अछि सेटा भी कहि परिबा ताहले हमर ऑप्शन सी द प्रिंटेड आउटपुट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स. डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स. Option A, storing. Option B, fetching. Option C, executing. Option D, decoding. And option E, none of these. Which option is the right answer? Option A, option B, option C, option D, या फिर option E. Dash is the process of carrying out commands. कमांड्स को कैरी आउट करिवार प्रोसेसटा कोन? द टर्म इज एग्जीक्यूटिंग. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. कंप्यूटर रे कोनोसी कमांड को से कैरी आउट करिवो ता माने कोन? प्रोसेसिंग करिवो. ताले प्रोसेसिंग माने कोन? एग्जीक्यूटिंग. एठी कंप्यूटर तार अरिथमेटिकल पावर लॉजिकल पावर यूज करिकी से डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द मेन फंक्शन ऑफ ALU इज. द मेन फंक्शन ऑफ ALU इज स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज. ऑप्शन बी, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. ऑप्शन सी, कंट्रोल कंप्यूटर आउटपुट सच एज प्रिंटिंग. ऑप्शन डी, monitor all computer activities. And option E, none of these. ALU रो कामो कोन बा ALU रो मुख्य फंक्शन कोन? If anyone know the answer, simply give the response by chat. The right answer is option B, perform arithmetic and logical operations. Simply ALU, arithmetic logic unit. तो कंप्यूटर रो जो CPU कहूचे which is the brain of our computer, that has two part. One is CU and another is ALU. CU रो काम होला controls each and every unit of the computer. कंप्यूटर रो प्रत्येक यूनिट को से कंट्रोल करथे. आउ ALU रो काम होला समस्त arithmetical task जेमति कि addition, subtraction, multiplication and division and logical operations like greater than, smaller than, equal to. All the comparisons are carried out by the ALU. So option B is the right answer, perform arithmetic and logical operations. Next question for you. Computers use dash number systems to store data and perform calculations. Computers use the dash number system to store data and
perform calculations. Option A octal, option B binary, option C decimal, option E hexadecimal, and option E none of these. Which option is the right answer? Computers use the dash number systems to store data and perform calculations. कंप्यूटर एमानक भितरु कोटा व्यवहार करिथाय, को नंबर सिस्टम टाको यूज करिथाय तारो काम गुडाक कैरी आउट करिबा पई बा तारो कैलकुलेशंस गुडाक डाटा स्टोरिंग पई को जिंसडा यूज करिथाय. The right answer is option B, binary number system. आमे कंप्यूटर को जहाँ भी दउचे नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, कंप्यूटर से गुडा किछि भी बुझे नहीं. कंप्यूटर बुझे तो ओनली 0 and 1. सो 0 and 1 को आमे बाइनरी डिजिट बोली कहि थाउ. एबो 0 and 1 को नै कि जो कोडिंग लिखा जाए ताकू बाइनरी नंबर सिस्टम ता कुआ जाय थाए. सो कंप्यूटर रो 0 1 शैली बुझुथिबा जगु अदरवाइज ताकू आमे मेशिन इंस्ट्रक्शन बोली कहि थाउ. एबो सेई जो कोडिंग गुडा का लिखा जाए सेई नंबर गुडा को नै कि ताकू मेशिन लैंग्वेज बोली कहा जाए. सिंपली ताले द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाइनरी. जेहेतु 0 1 को नै कि सब कंप्यूटर रे काम गुडा कहि थाए, प्रोसेसिंग हेइ थाए, स्टोरिंग हेइ थाए इंफॉर्मेशन गुडा को, दैट इज नोन एज द बाइनरी लैंग्वेज. सो कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर सिस्टम्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. Next question for you. The secret code that restricts entry to some programs. The secret code that restricts entry to some programs is known as option A, passport, option B, password, option C, entry code, option D, access time, access code, या फिर ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दिच. द सीक्रेट कोड दैट रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री टू सम प्रोग्राम्स. जो सीक्रेट कोड थाए कौन सी प्रोग्राम को एंट्री करिबा पाई ताकू कोन कहंती. एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स. व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पासवर्ड. ताले जदी कोन सी पासवर्ड हम एंट्री करू से मे भी जहां भी थाए सेटा विजिबल हुए नहीं. आइदर सेटा डॉट आकार विजिबल हुए, केबे केबे आस्ट्रिक मार्क्स रे विजिबल हुए. तो किंतु आमे कोन नंबर्स देइचे, लेटर्स देइचे बा एनीथिंग आमे यूज करिचे सेटा काहा को विजिबल हुए नहीं. दैट सीक्रेट कोड इज नोन एज ऑप्शन बी, पासवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज आउटपुट? very simple question. What is output? Option A, what the user gives to the processor. Option B, what the processor takes from the user. Option C, what the processor gets from the user. Option D, what the processor gives to the user. And option E, none of these. एमती ही एग्जाम मानक रे क्वेश्चन आसे. आमे समस्त जे जानिथु आउटपुट माने कंप्यूटर जोटा रिजल्ट दिए, किंतु क्वेश्चन गुडा कते इजीली भी पड़ी न थाए. क्वेश्चन गुडा को तुमको कंफ्यूज करिवा पई एई टाइप रो ही पड़ी थाए. तो मते एठी जनरेट करिवा को पड़िबो जा भितर कोटा पूरा परफेक्ट आंसर आउटपुट पाई. एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर. प्रोसेसिंग हेई सल्ला परे यूजर को कंप्यूटर कोनटा दउछि बा प्रोसेसर कोनटा दउछि सेटा ही होचा आउटपुट. एंड सब ऑप्शन गुडा का आउ ठीक लागुथिले भी सब ऑप्शन गुडा कहछि रॉन्ग. Next question for you. An error in a computer program. An error in a computer program. मु केबे केबे एमते कथा बाहनार भी कहितिबी कंप्यूटर एरर को कोन बोली कहंती. तो तार रिलेटेड और भलो क्वेश्चन भी आज आसी. ऑप्शन ए, पावर फेलियर. ऑप्शन बी, क्रैश. ऑप्शन सी, बग. ऑप्शन डी, वायरस. ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दिस. एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स. An error in computer program. Yes. कंप्यूटर रो एरर को प्रोग्रामिंग भाषा रे कोन बोली कहंती. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ताकू बग बोली कहंती. ए प्रोग्राम रे जेतेबेले कोनसी एरर हेई जाए
ताकू बग बोली कहंती एंड से जो एरर गुडा को खोजी की पाइबा को डीबग बोली कहंती तो कंप्यूटर एरर को बग बोली कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कंप्यूटर सिस्टम्स आर comprised of computer systems are comprised of option A hardware programs information people and procedures option B hardware programs processors procedures and people option C hardware programs information people and networks option D hardware software procedures data and people and option E none of these which one is the right answer सब किसी एका वाली लगुच किंतु आ भितर गोटी आंसर ही ठीक को आंसर टा सेटा ठीक कंप्यूटर सिस्टम आर कंप्राइज्ड ऑफ कंप्राइज माने कंप्यूटर सिस्टम इमान को कहा को नहीं की हिते ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन डी which one is the right answer you may give a response by the chat. Anyone can give the response? Which is the right answer? Option D is the right answer. Hardware, software, procedures, data and people. मैं explanation करी दूची कौन पाई? Computer system comprises these five things. People. People means who uses the computer. Who is the end users of the computer? माने जदि केही लोक जदि कंप्यूटर सहित इंटरैक्ट न करिवो हबो भी केमति काम. नेक्स्ट क्वेश्चन होची प्रोसीजर्स. किछि रूल्स और रेगुलेशंस को बेस करिबा इंस्ट्रक्शन अनुसार कंप्यूटर काम करि थाए सो प्रोसीजर्स नेक्स्ट होची सॉफ्टवेयर मो तो बारंबार भी कहिछि सॉफ्टवेयर इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आज ए व्हीकल कैन नॉट रन पेट्रोल विदाउट पेट्रोल जेमति गोटे व्हीकल पेट्रोल को छाडी दल चली परिबो नाही तो कंप्यूटर भी सेमति सॉफ्टवेयर को छाडी दल चली परिबो नाही नेक्स्ट ऑप्शन तमरो आछि कोन ना तमरो जोटा कहउछ डेटा डेटा तो होची निहाती दरकार आमे रॉ फैक्ट जदी कंप्यूटर को न दबा कंप्यूटर आम केबे भी यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करि परिबो नाही सो ऑप्शन डी इज द मोस्ट राइट आंसर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स डेटा एंड पीपल आर comprises a computer system. Okay, next question for you. A complete electronic circuit with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called. Listen the question. A complete electronic circuit with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called. Option A CPU, option B workstation, option C magnetic disk, option D integrated circuit and option E none of these. गोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ की ट्रांजिस्टर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को तैयारी होते जहाँ की स्मॉल सिलिकॉन चिप्स को नहीं तैयारी करा है ताको एग्जैक्टली हमें कौन बोली कहितो. Anyone can give the response? If anyone know the answer, simply give the response by chat. The right answer is integrated circuit जहाँ को हमें IC बोली भी कहू. एमिति कोनोसी डिवाइस नाही जोथरे कि आईसी लागि नथिबो आईसी जदी न लागिबो ताले से डिवाइस ता चली परिबो नाही सो आईसी इज द मेन पार्ट तो आईसी जोटा कहंदी इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. ए डैश इज a program that makes the computer easier to use. A dash is a program that makes the computer easier use. Option A application, option B utility, option C operating system, option D network, option E none of these. एमानक भितर कोटा से प्रोग्राम जहाँ की कंप्यूटर को व्यवहार करबा को इजी कर दिए सहज कर दिए. हमें तो सब जानी छे बट देखो केमती टेक्निकल क्वेश्चन गुडा को कंप्यूटर एबे आसुची एग्जाम मान करे हमें सब किछि भाबुचे कंप्यूटर बहुत इजी जिंस बट कंप्यूटर नॉट इजी सब्जेक्ट ताकू सेति की बुझी गला पर सब किछि इजी लागे नहले सेते इजी नुहे तारि भीतर भी टैक्टफुली क्वेश्चन एमती पचरा जाई पारे. व्हाट इज द राइट आंसर? एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स. यही रेस्पॉन्स दे परिबो की? द राइट आंसर इज यूटिलिटी.
utility is a program that makes the computer easier to use मु टिके बुझे दोछि कंप्यूटर रे सपोज भाइरस एंट्री करिवो तो भाइरस यदि एंट्री करिवो कंप्यूटर रो सब काम गुडा प्रॉब्लम करिवो जेमति कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाली बारे प्रॉब्लम हबो डाटा फाइल्स गुडा करप्ट हेजिवो कोडा फिटिवो कोडा न फिटिवो दरकार पले कटि जीवो तो एंटीवायरस भाइरस को डिटेक्ट करिवा बा भाइरस को एलिमिनेट करिवा पई गोटे जिंस सॉफ्टवेयर दरकार पड़े बा गोटे जिंस को लोड करा जाय यूटिलिटी जिंस सेटा को कहंती एंटीवायरस तो सेटा गोटे दरकार अछि निहांती पई एटा कंप्यूटर टास्क को आउट के इजी कर दी बा कंप्यूटर रे काम कला को आउट के स्मूथ कर दी आउ गोटे जिंस बेले बे गोटे फाइल तयारी करू गोटे छोट अमाउंट रो फाइल ता बहुत जागा नै जाय बहुत डिस्क स्पेस कवर कर दी ताकू दे छोट कर देबा दरकार सेति पे गोटे अछि डिस्क कंप्रेसर तो जो डिस्क कंप्रेसर द्वारा लार्ज अमाउंट रो फाइल को छोट कर दिया जाए तो सेटा भी गोटे यूटिलिटी प्रोग्राम जहा कि कंप्यूटर काम को आउट के स्मूथ कर देला बेले बेले कोन हुए आमे किछि फाइल करि नथिबा से फाइल गुडा का आपे आपे जनरेट हे जिवो तमे जेतो फाइल क्रिएशन करूचो डिलीट करूचो इंटरनेट रे ब्राउजिंग बसी करूचो कंप्यूटर को बहुत समय चलाउचो जेमति तम मोबाइल फोन रे देखुथबो बेले बेले जंक फाइल गुडा का जनरेट हे जाए तो कंप्यूटर रे भी ठीक सेमती अननेसेसरी फाइल गुडा का क्लीन होई जाए तो से जो अननेसेसरी फाइल गुडा को क्लीन करिवा पई गोटे यूटिलिटी प्रोग्राम होची डिस्क क्लीन अप जहा भी हो एई भली सब जिंस गुडा को यूटिलिटी प्रोग्राम जहा कि कंप्यूटर को इजी कर दिए आउट के यूज करिवा पई तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूटिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द टर्म बीट इज शॉर्ट फॉर ऑप्शन ए बाइनरी लैंग्वेज ऑप्शन बी मेगाबाइट ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट ऑप्शन डी बाइनरी नंबर एंड नॉन ऑफ दिस सबुतिक ऑप्शन एका भली लागुची व्हाट इज द राइट आंसर अमंग देम एमान को भितर कोटा होची ठीक उत्तर एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स द टर्म बीट इज शॉर्ट फॉर ए जो बीट कहू हमें कंप्यूटर मेजरमेंट यूनिट ता सबुठारु स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट बीट हेता बीट प्रथमे निबेल रु सॉरी बीट रु जाइथा निबेल रु जाइथा हमर बाइट रु जाइथा किलोबाइट रु मेगाबाइट रु जीजाबाइट रु टेराबाइट रु पेटाबाइट रु एक्साबाइट रु योंटोबाइट बस हम तो यूज होनी है येते मोर सिंपली क्वेश्चन होची द शॉर्ट टर्म बीट इज शॉर्ट फॉर बीट ता होची कहार शॉर्ट फॉर्म द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट ताले 0 और 1 that is 1 bit so option C binary digit is the right answer and all other options are wrong next question for you what is backup the options are protecting data by copying it from the original source to a different destination option B adding more components to your network option C filtering old data from the new data option D accessing data on tape and option E none of these what is backup कहले कौन बुझा जाए anyone can give the response डाटा बैकअप कहले कौन कुआ जाए कोटा को बुझाए मु तुमको गोटे सिंपली कहि दोछि डाटा बैकअप माने कंप्यूटर रो कोनोसी गोटे प्रोग्राम बा कोनोसी गोटे फाइल गोटे लोकेशन रे अछि एंड से लोकेशन रु अन्य गोटे लोकेशन रे नेकी सुरक्षित उपाय रे रखि परिबा दैट इज नोन एज द बैकअप ताले ए जो टर्म तुमको कहली पांचटा ऑप्शन ए पांचटा ऑप्शन भीतर कोटा होचे राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपीइंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन ओरिजिनल सोर्स जो जगह रे अछि ताको गोटे डिफरेंट डेस्टिनेशन को ट्रांसफर करबा को बैकअप बोली कह जाय हमें बहुत सिंपल टर्म गुडा को भाबू किंतु सेतडा सिंपल नहे ताको सब किछि एका भली लागुची किंतु आ भितरो हमको राइट ऑप्शन टी ही बाहर करबा को पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट मेनू सिलेक्टेड टू प्रिंट ऑप्शन ए स्पेशल ऑप्शन बी एडिट ऑप्शन सी फाइल ऑप्शन डी tools option E none of these what menu selected to print
Anyone can give the response? What menu is selected to print? Print करिवा पाई एमानक भितरु कहा को मेनू ऊपर हमें डिपेंडेंट करिवा बा को ऑप्शन ऊपर हमें डिपेंडेंट करिवा. The right answer is option C, file. फाइल टैब जो थाए बा फाइल मेनू थाए सेतरा हमें क्लिक करदेला को गोटे लिस्ट पळे आसे से लिस्ट भितर ही थाए प्रिंट. So option C is the right answer. Next question for you. A set of instructions telling the computer what to do is called. A set of instructions telling the computer what to do is called. जो set of instruction computer को कहे जे computer रे कौन करिबा को अछि. The options are A, instructor, option B, mentor, option C, compiler, option D, program, and option E, none of these. A set of instructions telling the computer what to do. The right answer is option D, program. से जो set of instruction को नहीं की हमें कंप्यूटर को किसी करिवा पाई कही थाउ ताकू प्रोग्राम बोली कहा जाय थाए. तो प्रोग्राम is collection of instructions. Next question for you. The person who writes the test the computer programs is called a. The person who writes and tests computer program is called a. Option A, computer scientist. Option B, programmer. Option C, software engineer. Option D, project developer. And option E, none of these. Which option is the right answer? Option A, option B, option C, option D, या फिर option E. Anyone can give the response. If anyone know the answer, simply give your response by chat. The person who write and test computer programs is called a. The right answer is B, programmer. ताकू programmer बोली कहती. Next question for you. An operating system that can do multitasking means that an operating system that can do multitasking means that option A, several programs can be operated concurrently. Option B, the operating system can divide up work between several CPUs. Option C, multiple people can use the computer concurrently. Option D, all of the above. And option E, none of these. An operating system that can do multitasking means that गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जहा कि मल्टीटास्क करि पारे माने एक रो अधिक कैरी आउट करि पारे टास्क बा काम ताको कोन बोली कहै जाय छै. Option A is the right answer. Several programs can be operated concurrently. अनेक गुडाय ऑपरेशन जेमति के पडे गीत बाजी परिबो से पडे फाइल का को ट्रांसफर होई परिबो एपडे किछि डॉक्यूमेंट रो जनरेट बा तयारी करा जाय परिबो. तो एका समय अनेक गुडाय काम एमति से पडे हमें इंटरनेट रो भी ब्राउजिंग करि परिबो. तो मल्टीटास्क हमें कैरी आउट करिबा माने सेवरल प्रोग्राम्स कैन बी ऑपरेटेड concurrently. अनेक गुडाय प्रोग्राम एका समय हमें ऑपरेशन करि परिबा. Next question for you. In page preview mode, you can only see the page you are currently working. Option B, you can see all pages of your document. Option C, you can only see pages that don't contain graphics. Option D, you can only see the title page of your document. And option E, none of these. In page preview mode आमे मान को भितर को एक्टिविटी टा करि परिबा. Anyone can keep the response. Just hints भी दे दोउची प्रिंट करि सरला पर किछि करि हबो नाही. आमे गोटे थरो प्रिंटिंग पूर्वरु से पेज को देखि नबा जे से पेज को आमे को भली हिसाब रे प्रिंट करिबा को जाउचे ताले सेई जो बिफोर प्रिंट जो एक्शन ताको प्रिंट प्रीव्यू बोली कहंती. एंड सेई जो प्रिंट प्रीव्यू मोड रो एमान को भितर को कैरेक्टरिस्टिक्स ता फुलफिलमेंट हुए
Anyone can give the response? The right answer is option B. You can see all pages of your document. एई जगह रे तमे डॉक्यूमेंट रो समस्त पेज गुडा देखि परिबो को भली हिसाब रे तमे प्रिंट करबा को जाउछो एवं को भली हिसाब रे ताको प्रिंट करबा को चाहूछो. Okay, next question for you. An application program has which one of the following functions? An application program has which one of the following functions? गोटे application program रो एमानक भितरु को फंक्शन कैरी आउट करे? Option A, it controls the input, output and storage functions of the computer system. Option B, it specifies the information processing procedures required by a particular information processing job. Option C, it provides various support services for the computer system. Option D, it supervises the operations of the CPU. And option E, none of these. An application program has which one of the following functions? गोटे application program रो एमानक भितरु को कामटा हेई थाए. Anyone can give the response? It provides various support services for computer system. Option C is the right answer. सबुथिक एका भली लागुथिले भी option C होची more appropriate answer. It provides various support services for the computer system. आमे जदि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बा एप्लीकेशन प्रोग्राम किछि न रखिबा कंप्यूटर चली भी परिबो नाही. जेमते गोटे कार रो पेट्रोल रो आवश्यक रहिछि एक्जेक्टली सेमती कंप्यूटर पई सॉफ्टवेयर बा एप्लीकेशन रो भी आवश्यक रहिछि. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन on the web are called. Specialized programs that assist the users in locating information on the web are called. Option A, search engines. Option B, information engines. Option D, web browsers. Option D, resource locators. Option E, none of these. Specialized programs that assist users in locating information on the web. से जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दा थाए जहा कि यूजर को असिस्ट करे बा सहयोग करे कोन से गोटे इंफॉर्मेशन को खोजिबा को वेब रो तो सेटा एग्जैक्टली कंप्यूटर रो कोन स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन. एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सर्च इंजन बोली कहंती. Search engine is a special type of application where the databases are maintained of the different topics. आमे जेतबे इंटरनेट रे कोनोसी विषय जानि पारुना को टॉपिक ता गोटे जानि पारुना जे कोनोसी वेबसाइट रे मते मिलिबो इटा बा वेब पेज रे मते मिलिबो सेतबेले मो सर्च इंजन रो सहाय्य निए. सर्च इंजन सर्च माने होची खोजिबा जो इंजन माध्यम रे आमे किछि जिंस को सर्च करिबा. सिंपली आमे एई जगह रे गोटे लेटर बा कीवर्ड बा फेज को जतले पुट करि दो से रिलेटेड से अनेक गुडा वेब पेज रो इंफॉर्मेशन हमको दे दिए टॉपिक वाइज. जेमति कि सपोज ए लेखु लेखु का ए आन आट आंट एमते मेंचे जिंस से दे दबो इंफॉर्मेशन. तो आमे पर्टिकुलरली को कीवर्ड बा फेज विषय पुट करि देले एठी रिलेटेड वेब पेज गुडा का डिस्प्ले हुए एंड आमे इजीली सेही जगह को जाई कि से इंफॉर्मेशन दा को वेब रो सर्च कर दे पारू. ताले द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ताको सर्च इंजन बोली कहंती. जेमति कि गूगल, याहू, लाइकस, गो टू, बिंग, डॉगडॉगो. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A saved document is referred to as a saved document is referred to as a गोटे सेव डॉक्यूमेंट को आमे कोन बोली कहू? ऑप्शन ए, वर्ड. ऑप्शन बी, फाइल. ऑप्शन सी, फोल्डर. ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट. And option E, none of these. Anyone can give the response? If anyone know the answer, simply give your response by chat. A saved document is referred to as a गोटे saved document को कौन बोली कहा जाए? Word, file, folder, project and none of these. The right answer is option B, file. आमे गोटे डॉक्यूमेंट को सेव करिबा
केते जण ता कहि दियंतु वर्ड, केते जण कहि दियंतु डॉक्यूमेंट, सब ठीक अछि बट जनरली सेटा होची सेही एप्लीकेशन पई गोटे फाइल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. अच्छा एट जस्ट टिके मु कहि दोची जेतले फोल्डर फाइल कथा आसीची. फोल्डर दैट इज ए स्ट्रक्चर फॉर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स. फोल्डर टा होची एबडी गोटे स्ट्रक्चर बा पद्धति जहां माध्यम रे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम रे तयारी हितिबा फाइल गुडा को स्टोर करू. देन व्हाट इज फाइल? एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन that can be a file, that may be a music, that may be a form of video, that may be a form of picture, that may be a form of a document. So that is known as file. Okay, next question for you. To move to the beginning of a line of text, press dash key. Very easy question. To move the beginning of a line of text, press dash key. Option A. Option B, page up. Option C, home. Option D, enter, and option E, none of these. To move to a beginning of a line of text, press the dash key. The right answer is option C, that is home key. पूरा पूरी आरंभ को हमें पढ़ेबा जेते जोटी भी थाए डॉक्यूमेंट रो होम की मारी दउछ तो पूरा पूरी ऊपर को पढ़ेबा पूरा पूरी फास्ट को पढ़ेबा. The right answer is option B. Option C, home. Next question for you. A collection of interrelated records is called. A collection of interrelated records is called a dash. Option A, management information system or MIS. Option B, utility file. Option D, database. Option D, spreadsheet, and option E, none of these. A collection of interrelated records is called. Interrelated record गुडाकर collection ताको हमें कौन बोली कहू. मु जस्ट हिंट्स भी दे दूची. This is related to MS Access or database operations. Anyone can give the response? The right answer is database. आमे database रो जो information को generally जो थ्री भी आमे database तैयारी करू that is the form of a table. गोटे table format रे जिंस होई थाए. And table format रे obviously सितरे row और column generate होबो. धाड़ी और स्तंभ रो निश्चित तैयारी हितिबो. तो database रे प्रति कॉलम को गोटे गोटे फील्ड बोली भी कहती. प्रति कॉलम को गोटे गोटे फील्ड बोली भी कहती एंड प्रति रो को गोटे गोटे रेकॉर्ड बोली भी कहती. सो से पचारिथिला इंटर रिलेटेड रेकॉर्ड्स माने रो वाइज जो इंफॉर्मेशन गुडा रेकॉर्ड माने एंट्री थाए ताको गोटे गोटे रेकॉर्ड बोली कहती. द रिलेटेड फील्ड्स इज नोन और क्रिएटेड रेकॉर्ड. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डाटाबेस. अनेक गुडा रिलेटेड रेकॉर्ड रो समाहार रे गोटे डाटाबेस ही तयारी ही थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. विथ ए सीडी यू कैन यस राइट, रीड एंड राइट, either read or write, none of these. With a CD you can dash write, read and write, either read or write, and none of these. But CD को नहीं तमे कौन करि परिबो? Anyone can give the response? The right answer is option C, read and write. हमर CD ROM जदी हितिबो ताले केवल से इनफॉरमेशन जहाँ गला रीड करी हबो. एंड आमे जदी सीडी आरडब्ल्यू हिथिबो ताले से पूर्व इनफॉरमेशन गुडा आमे काटी देई परिबा. पुणी आउ थरे नुवा इनफॉरमेशन को भी रिकॉर्ड कर देई परिबा, स्टोर कर देई परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आपे मु बेसी समय नेबी नहीं. व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट? सब वर्ड डॉक्यूमेंट जो सेव करा जाए को फाइल एक्सटेंशन रे. ऑप्शन ए txt, ऑप्शन बी wrd, ऑप्शन सी docx, ऑप्शन डी fill, ऑप्शन ई none of these. What is the default file extension
for all Word documents? The right answer is option C, that is .docx. सब किसी वर्ड फाइल गुडा को .docx एक्सटेंशन रे सेव करबा को पड़े. Next question for you. The quickest and easiest way in Word to locate a particular word or phrase in a document is to use dash command. The quickest and easiest way in Word to locate a particular word or phrase in a document is to use dash command. सबुठारु quickest, शीघ्र, easiest, सहज बाट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे हमें यूज करू पर्टिकुलरली गोटे वर्ड बा फ्रेज को खोजिबा पाई ताले को कमांड को यूज करू. ऑप्शन ए फाइंड, ऑप्शन बी रिप्लेस, ऑप्शन सी लुक अप, ऑप्शन डी सर्च, ऑप्शन ई none of these. Anyone can give the response? The quickest and easiest way in Word to locate a particular word or phrase in a document is to use dash command. The right answer is option A, find. Find बोली गोटे ऑप्शन थाए जोटा कि हमर होम टैब रो एडिटिंग भितर थाए. सेथि पई हमें कंट्रोल से तो एफ बी प्रेस करि परिबा. सेठी हमें जो वर्ड बा जो फेस टा पुट करिबा सारा डॉक्यूमेंट रे से वर्ड बा फेस को हाइलाइटिंग करी देखे दबो जे ए वर्ड बा ए फेस ता हमें खोजिबा को चाहू छे. So option A is the right answer, find. Next question for you. The contents of dash are lost when the computer turn off. The contents of dash are lost when computer turn off. Option A, input. Option B, storage. Option C, output. Option D, memory. And option E, none of these. The contents of dash are lost when the computer turn off. Input, storage, output, memory, none of these. The right answer is option D, memory. Memory is a temporary storage location. आमे जानी छे कंप्यूटर रो मेमोरी होची दुई भाग रे विभक्त. गोटे होची प्राइमरी मेमोरी, गोटे होची सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को अदरवाइज हमें वोलेटाइल मेमोरी कहू, मेन मेमोरी कहू, एक्टिव मेमोरी कहू एंड इंटरनल मेमोरी बोली भी कहू. सेकेंडरी मेमोरी को अदरवाइज ऑक्सिलरी मेमोरी बोली भी कहा जाए, पासिव मेमोरी बोली भी कहा जाए, ताको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोली भी कहा जाए बा एक्सटर्नल मेमोरी बोली भी कहा जाए. किंतु प्राइमरी मेमोरी थिबा इंफॉर्मेशन दैट इज टेम्पररी इन नेचर. कंप्यूटर जे पर्यंत पावर सप्लाई ऑन थिबो सब किछि इंफॉर्मेशन थिबो. कंप्यूटर स्विच ऑफ होई गला, प्राइमरी मेमोरी इंफॉर्मेशन कटि गला एंड सेकेंडरी रे मास इंफॉर्मेशन को परमानेंटली तमे रखि परिबो. जहा भी हो से कहिछि जे कोथरे कंटेंट्स ता नष्ट हो जाय. सिंपली मेमोरी जोटा को हमें प्राइमरी मेमोरी बोली कहू. किंतु हां प्राइमरी मेमोरी जदी न थिबो सेकेंडरी मेमोरी भी किछि भूमिका नै, बिकॉज़ दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द प्रोसेसर. माने सीपीयू सहित सीधा सळक इटा इंटर रिलेटेड. RAM ROM ए दीटा प्राइमरी मेमोरी कहंती. हां रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. तो RAM रो भी दुई प्रकार अछि, DRAM एंड SRAM. ROM रो सेमति तीन प्रकार अछि, PROM, EPROM एंड EEPROM. जहा भी हो तो मेमोरी जोथरे की इंफॉर्मेशन परमानेंटली रही पारे नाही. कंप्यूटर स्विच ऑफ होबा सहित इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाए. So option D is the right answer. Next question for you. For creating a document, you use dash command at file menu. To create a document, you use dash command at file menu. Option A, close. Option B, open. Option C, new. Option D, save. Option E, none of these. Very, very simple question. Option C is the right answer, new. तो फाइल मेनू को न्यू को गले ही ऑब्वियसली गोटे नुआ डॉक्यूमेंट हमें जनरेट करि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Reusable optical storage will typically have the acronym. Reusable optical storage will typically have the acronym. Option A, DVD. Option B, CD. Option C, ROM. Option D, RW. Option E, none of these. Anyone can give the response? Reusable optical storage
will typically have the acronym reusable. Reusable माने जोटा को हमें आउ थरे व्यवहार करि परिबा ताले सेटा को कंप्यूटर क्षेत्र रे को टर्म टा को हमें यूज करिबा. Anyone can give the response? The option D is the right answer. RW, rewrite, read write. तुम आउ थरे करि परिबो, आउ थरे ताको यूज करि परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन तो आमे देखि दिबा बेले बेले किछि डीवीडी ऊपर लिखा है डीवीडी आरडब्ल्यू, सीडी ऊपर भी लिखा है सीडी आरडब्ल्यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. The background of any Word document. The background of any Word document. Option A is color you preset under the options menu. Option B is always white color. Option C is always the same for the entire document. Option D can have any color you choose. Option E, none of these. Which option is the right answer? The background of any Word document. Option A, option B, option C, option D, या फिर option E. Which is the right answer? The right answer is option D. Can have any color you choose. Simply तमे जो कलर चूज करिवो बैकग्राउंड से ही हबो. अन्य गुडा को सब ठीक लागुथिले भी रॉन्ग. आमे बेले बेले भाबी देबा व्हाइट कलर तो सब बेले डॉक्यूमेंट देखा जाय. ऑप्शन बी टा मे भी ठीक हबो नुहे. सब बेले मन रखिथिबो एग्जाम रे अपियर कला बेले क्वेश्चन को ठीक दबा पई चेष्टा करिवो. काहे कि ना भूल क्वेश्चन देले माइनस मार्किंग होबार पॉसिबिलिटीज थाए. सो क्वेश्चन को टिके भलो भाबे व्यू करिवो एंड गोटे क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 37 बा 1 मिनिट भितर कंप्लीट करबा को चेष्टा करिवो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर्स टू. द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर्स टू. द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर्स टू. यूजर इंटरफेस कहिले कोन बुझा जाय? ऑप्शन ए, how the operating system responds to the user commands. Option B, what the user sees on the screen and how they can interact with it. Option C, the means by which the user interacts with the peripheral devices on the computer. Option D, the monitor that is available for the computer. And option E, none of these. The term user interface refers to. User interface कहले मान को भितर कोटा बुझा जाय? Option B is the most appropriate answer. What the user sees on the screen and how they can interact with it. ताले जोटा स्क्रीन रे यूजर देखे एवं से स्क्रीन रे कोन इंटरैक्ट करि परिबो. माने से किछि डायलॉग बॉक्स आसीछि बा किछि कमांड्स दबा पई कहूछि. यूजर पुनी बाय क्लिक कला बा कीबोर्ड रो टाइपिंग कला पुनी से किछि रेस्पोंस देला. तो सेही बळी जो जागाटा कंप्यूटर रो थाए सेही बळी जो जिंसडा थाए ताकू कंप्यूटर भाषा रे यूजर इंटरफेस बोली कहंती. तो यूजर एवं कंप्यूटर रो इंटरैक्शन जोठी हे पारुथिबो. ओके, सो ऑप्शन बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एंड राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. टू सेव an existing file with a new name or to a new location, you should use the dash command. To save an existing file with a new name or a new location, you should use the dash command. गोटे existing file को नुआ ना नुआ लोकेशन रे नुआ फॉर्मेट रे सेव करबा को तमे चाहूछो ताले को कमांड रे यूज करिवो. ऑप्शन ए, सेव एंड रिप्लेस. ऑप्शन बी, सेव. Option C, save as. Option D, new file. And option E, none of these. To save an existing file with a new name or to a new location, you should use the dash command. Option C is the most appropriate answer. Save as. Save as रे हमें गोटे नुआ ना दे परिबा. नुआ लोकेशन बा नुआ जगह रे ने कि डॉक्यूमेंट को सेव करि परिबा एंड गोटे नुआ फॉर्मेट रे भी सेव करि परिबा. जहां पर कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रो किछि चेंज हबो नाही बट गोटे नुआ डॉक्यूमेंट ता जनरेट हे जिवो बा तयारी हे जिवो. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू.
the most common input devices are the dash and the dash. Very, very easy question. The most common input devices are the dash and dash. Scanner, monitor. Option B, microphone, printer. Option D, digital camera, speakers. Option D, keyboard, mouse. Option E, none of these. The right answer is option D, keyboard and mouse. These are the common input devices. Next question for you. The dash key and the dash key can be used in the combination with other keys to perform shortcuts and special tasks. The dash key and the dash key can be used in the combination with the other keys to perform shortcuts and special tasks. Option A, function toggle. Option B, control alt. Option D, delete insert. Option D, caps lock, norm lock. Option E, none of these. The dash key and the dash key can be used in the combination with other keys to perform shortcuts and special tasks. को की को एकाठी कॉम्बिनेशन करी मिशा जाए अन्य की मानक सहित किछि गोटे स्पेशल टास्क करिया पई शॉर्टकटली काम करिवा पई. Anyone can give the response? Option B is the right answer. CTRL and Alt, Control and Alt. ताको हमें स्पेशल की बोली कहू. सुनो कीबोर्ड रे मुख्यतः आमर जेतिकी की थाए ताको 6 टा कैटेगरी रे बांटी दिया जाई छी. कीबोर्ड रे मुख्यतः 3 टा सेक्शन थाए. गोटे फंक्शन सेक्शन, गोटे नॉर्मल सेक्शन, आ गोटे न्यूमेरिक सेक्शन. जहा हो कीबोर्ड रे जेते गुडाय की थाए ताको 6 टा कैटेगरी रे बांटी दिया जाए. जेमति की फंक्शन की, अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की, अल्फान्यूमेरिक की, स्पेशल की एंड नेविगेशन की. तो आमे देखि जे कीबोर्ड रे F1 थारु F12 पर्यंत की थाए ताकू कोनदी फंक्शन की. नंबर की गुडा को गोटे स्पेशल जगह थाए ताकू कोनदी न्यूमेरिक की. से नंबर की गुडा को पुनी अगेन अल्फाबेट पाखरे थाए A थारु Z पर्यंत जो थाए सेठी थाए तो ताकू अल्फा न्यूमेरिक की कोनती. पुनी A थारु Z पर्यंत की थाए ताकू अल्फाबेट की कोनती. आउ किछि की गुडा को थाए जेंति की ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट ए भली की गुडा को कहा सहित गोटे मिसले किछि गोटे काम करिवो. सो दिस की आर स्पेशल कीज. आउ जते छाडी देले रहिला सब तो नेविगेशन कीज. तो सिंपली control and alt are the combination with the other keys to perform the shortcuts and special. तार निजस्व किछि काम नाही. अन्य कोनोसी की सहित मिसिला परे किछि स्पेशल टास्क बा शॉर्टेस्ट काम उडा को कैरी आउट करिथे. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Next question for you. Hard disk drives are considered dash storage. Option A, non-volatile. Option B, class. Option C, temporary. Option D, non-permanent. Option E, none of these. Hard disk drives are considered as dash storage. Anyone can give the response? Hard disk drives are known as non-volatile storage. आपको non-volatile माने एथरे इंफॉर्मेशन जदी गोटे थर स्टोर हुए कंप्यूटर स्विच ऑफ होबा सहित इंफॉर्मेशन नष्ट हुए ने. तमे जो कंप्यूटर स्टार्ट कर देखु जो प्रोग्राम गुडा को बा जे कोनसी जिंस सब किछ हम हार्ड डिस्क रे स्टोर अछि. सो दिस इज अ नॉन volatile storage. Option A is the right answer. Next question for you. Dash is when the more power hungry components such as the monitor and hard drive are put in idle. Dash is when the more power hungry components such as the monitor and the hard drive are put in idle. Option A, power down. Option B, hibernation. Option C, standby mode. Option D, the shutdown procedure. And option E, none of these. मो सबु बेले कहूची एग्जाम रे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन एई भलिया ही पचरा जाय. केबे सिंपली क्वेश्चन पचरा जाय नाही. तुमको सबु काम जानिथिले भी ता भितरे ही तुमको टैक्ट भर्ती करिवा को पड़िबो एंड टिके इंटेलिजेंस बा निजस्व नॉलेज को इन्वेस्टमेंट करिवा को पड़िबो.
जे कोटा ठीक आंसर हे परिबो dash is the more powerful hungry component such as monitor and hard drive are put in idle. Which option is the right answer? जितेबले कौन सी सीपीयू बा जो कहूँ मॉनिटर बा हार्ड ड्राइव को आम आइडल रखा चाहूबा सिंपली आमको सी को जीवा पड़ो स्टैंड बाय मोड को कंप्यूटर थी सेमती बट सेटा आइडल हम तार किसी परफॉर्मेंस हमनी स्टैंड बाय मोड रे रहिबो सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स the sharing of information between computing devices. A dash is a combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computer drives devices. Option A, peripheral. Option B, network. Option C, expansion board. Option D, digital device. Option E, none of these. Anyone can give the response? The right answer is digital device. A digital device is a combination of hardware and software that facilitates sharing information between the computing devices. आमे जेकोसी कंप्यूटर जिंस गुडा सब डिजिटल डिवाइस बोली कहती अच्छा डिजिटल डिवाइस बोली कहिबार गोटे अछि काहेकि ना सब किछि कंप्यूटर आमे जानिछे सब 0 1 शैली रे बुझी थाए 0 होची गोटे डिजिट एंड 1 होची गोटे डिजिट बाय द फॉर्म ऑफ इनपुटिंग प्रोसेसिंग जहां भी होची हो किंतु कंप्यूटर रो जो कहती ऑल इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन एंड data are presented by in form of digits 0 1 so all the devices are known as the digital device. Okay, next question for you. In a database dash fields store numbers used to perform calculations. In a database dash fields store numbers used to perform calculations. Option A, key. Option B, next. Option C, alphanumeric. Option D, numeric. Option E, none of these. Database रे एमानक भितर को फील्ड टा व्यवहार करा जाए नंबर्स गुडा को नबा पाई सिंपली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर न्यूमेरिक हमें डाटाबेस रे बहुत गुडा ऑप्शन पाऊ शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट न्यूमेरिक डेट एंड टाइम लुकअप एंड रेफरेंस लुकअप विजार्ड तो या भितर होची ठीक आंसर न्यूमेरिक ता होची ठीक आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू समथिंग which has easily understood instructions is said to be something which has easily understood instructions is said to be option A, information. Option B, user friendly. Option C, word processing. Option D, icon. Option E, none of these. Something which has easily understood instructions is said to be किछि जिंस जहा की इंस्ट्रक्शन गुडा को इजीली बुझी थाए ताकू कोन कहंती कंप्यूटर पाई सेथि पाई गोटे टर्म व्यवहार करा जाय ऑप्शन बी ताकू यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बोली कहंती ये सब जिंस गुडा को पाखा पाखी लागुथिले भी ऑल आर द रॉन्ग आंसर्स ओनली राइट आंसर इज यूजर फ्रेंडली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू the portion of the CPU that coordinates the activities of all other computer components is the option A, coordination board. Option B, motherboard. Option C, control unit. Option D, arithmetic logic unit. Option E, none of these. The portion of the CPU that coordinates the activities of all other computer component is called. Anyone can give the response? The right answer is option C, control unit. Control unit controls each and every unit of the computer. Computer प्रत्येक यूनिट को कंट्रोल करि थाए. CPU रो दुईटा पार्ट थाए गोटे ALU आ गोटे हला CU. तो CU रो काम होला
ये प्रति जिनस सहित कोऑर्डिनेशन करि थाए एंड कंप्यूटर रो कंपोनेंट्स गुडा को फंक्शनेट करिबा पई हेल्प करि थाए. Next question for you: which type of software manages the computer processes functioning as an interface connecting to the user, the application softwares and hardware? Option A, utility program. Option B, system software. Option C, translator program. Option D, operating system. And option E, none of these. Which type of software manages the computer processes functioning and interface connecting to the user, the application softwares and the hardware? एमानक भितर कोटा सॉफ्टवेयर जहा कि मैनेज करि थाए कंप्यूटर रो प्रोसेस गुडा को, कंप्यूटर रो फंक्शन गुडा को, यूजर इंटरफेस को एवं कोनोसी जिंस बा यूजर पाई जो एप्लीकेशन इंटरफेस जनरेट करिबा कहा काम. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ताको ऑपरेटिंग सिस्टम बा ओएस बोली कहंती. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे से भली गोटे कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोग्राम जहा कि कंप्यूटर रो ओवरऑल काम को कंट्रोल करि थाए. जेमति कि आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस गुडा को मैनेजमेंट करि थाए, मेमोरी को मैनेजमेंट करि थाए, सीपीयू को मैनेजमेंट करि थाए, यूजर इंटरफेस को मैनेजमेंट करि थाए, डिस्क भी मैनेजमेंट करि थाए. सीपीयू रो बहुत एंती काम अछि. सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम रे एंती बहुत सारा काम अछि. सो ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इज द राइट आंसर. Next question for you: a dash is approximately 1 billion bytes. A dash is approximately 1 billion bytes. Option A, bit. Option B, kilobyte. Option C, gigabyte. Option D, megabyte. And option E, none of these. A dash is approximately 1 billion byte. The right answer is option C, gigabyte और जीबी जोटा को बोली कहंती सेटा होची हमर 1 बिलियन बाइट बोली धरिना जे. बीट प्रथम निबेल, निबेल पर प्रथम बीट, बीट पर होची निबेल, निबेल पर होची बाइट, बाइट पर होची किलोबाइट, किलोबाइट पर होची मेगाबाइट, मेगाबाइट पर होची जीजाबाइट, जीजाबाइट पर होची टेराबाइट, टेराबाइट पर होची पेटाबाइट, पेटाबाइट पर होची एक्साबाइट. एमती चली छी. Next question for you: dash are devices used to transmit data over telecommunication lines. Option A, drives base. Option B, drives. Option C, modems. Option D, platform. Option E, none of these. Dash are devices used to transmit data over telecommunication lines. Anyone can give the response? The option C is the right answer. Modem, modulator and demodulator. जहार काम होला converting analog signals to digital form and digital form of information to analog form. So एटा टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र रे हमरो इंटरनेट क्षेत्र रे टेलीफोन लाइन रे एवं हमरो कंप्यूटर मध्य रे आको सेटिंग करा जाय. All of the following terms are associated with spreadsheet software except. एमानक भितर समस्त टर्म गुडा को हमर स्प्रेडशीट सहित एसोसिएटेड या व्यतीत. ऑप्शन ए, सेल. ऑप्शन बी, वर्कशीट. ऑप्शन सी, फॉर्मूला. ऑप्शन डी, वायरस डिटेक्शन. ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दिस. गोटे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सहित एमानक भितर सब किछि एसोसिएटेड नुह जण गोटे जिंस को बाद दे देले. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. वायरस डिटेक्शन आ सब किछि थाए. सेल तो थाए काइना रो कॉलम जोटी इंटरसेक्ट हुए सेल हुए. जोटा एक्सेल रो मुख्य काम करबा जगह सेटा तो वर्कशीट. फॉर्मूला तो एक्सेल रो अनडिवाइडेड पार्ट. सो वायरस डिटेक्शन बोली किछि ओटे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन रे न थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू: द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर. एटा जस्ट कि आगुर जाइतला अगेन पुन रिपीट हो जाइछि तो सेटा होछि बाइनरी डिजिट बोली कहंती. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू: which of the following statement is true concerning. एमानक भितरु कोठा होछि ट्रू. ऑप्शन ए, accessing data from RAM is a slower than accessing data from the virtual memory.
Virtual memory is the space on the hard drive where the operating system begins to store data when it becomes memory bound. Option C, when it is using virtual memory, the operating system builds a file called the RAM file. Option D, if a computer memory bound, adding more RAM will not solve the problem. And option E, none of these. ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା true? The option B is the right answer. Virtual memory is a space on the hard drive where the operating system begins to store data when it becomes memory. Okay, next question for you. Servers and computers that provide resources to other computers connected to a servers ଏବଂ computers ଗୁଡାକ ଯାହା ଗୋଟେ interface ଦେଇଥାଏ connected କରିବା ପାଇଁ. Option A, mainframe. Option B, network. Option C, supercomputers. Option D, client. Option E, none of these. Option B होची network. ताले अनेक गुडा कंप्यूटर सर्वर एवडा सब कनेक्टेड हुअंती गोटे नेटवर्क जनरेट करिया पई गोटे नेटवर्क तैयार करिवा पई. The dash is a form of permanent memory that holds all the instructions the computer needs to start doesn't get erased when the power turn off. Computer turn off हवा सहित जो थ्रू इंफॉर्मेशन टा कटे नाही एवं इंस्ट्रक्शन गुडा को होल्ड करिक से रखी देते भागा है एवं फ्रीक्वेंटली नुहे ताले सेटा कोन सीपीयू एनआईसी RAM ROM none of these. Option D is the right answer. सेटा होची actually ROM, read only memory. Which of the following term is just connected the networks that is joined together? एमानक भितर को टर्म ता जस्ट नेटवर्क मान को जॉइनिंग करिवा पई यूज करा जाय. Option A, internet, the world's largest computer network. Computers gather data, which means that they allow users to dash data input. Option B, present. Option C, output. Option D, store. And option E, none of these. The right answer is option A, input. And the last question for you, a repair for a known software bug usually available at no charge on the internet is called. गोटे रिपेयरिंग करबा को सॉफ्टवेयर बग को हमें जनरली नो चार्ज कोन कॉस्ट दबा को पड़े नहीं इंटरनेट रे ताको कोन बोली कहंती. ऑप्शन ए पैच, ऑप्शन बी वर्जन, ऑप्शन सी ट्यूटोरियल, ऑप्शन डी एफएक्यू, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस. सेटा को एक्चुअली पैच बोली कहंती. वर्जन तो हला हम डिफरेंट एडिशन गुडा को सॉफ्टवेयर. ट्यूटोरियल माने ताको यूज करिवार गाइडलाइंस. एफएक्यू माने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ता रिलेटेड किछि क्वेश्चन जदी पचरा जाइतिला सो से जो जिंसटा को एक्चुअली कहंती पैच. से सॉफ्टवेयर बग को फिक्सेशन करा जाय नो कॉस्ट रे जदी तमर न चले तो सेतोले से जो टर्मटा हमरो technically term that is known as the patch. So option A is the right answer. So dear students, the time is very short and we have to completed this class from this time. Thank you all for joining the class. Sorry.